Hi guys, I'm Zeba. Welcome back to my YouTube channel. So I know it's been long and I was not really putting any efforts on doing makeup and all because I was preoccupied with something. But now I'm gonna focus on doing what I love. So yeah. आज मैं करने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप और ये उन ब्राइड्स के लिए है जो पार्लर नहीं जाना चाहती हैं और घर पे ही विथ मिनिमम रिसोर्सेज अपना मेकअप करना चाहती हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है कि आप अपने फेस को पहले प्रेप कर लें। उसके लिए आप अपना फेस वॉश कर लें सबसे पहले। उसके बाद टोनर, यू शुड अप्लाई टोनर एंड मॉइस्चराइज योर फेस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी मिनिमल रिसोर्सेज, वी आर नॉट हियर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन मेकअप एंड ऑल। सो अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं उसकी जगह पर। इट वर्क्स ग्रेट एज अ प्राइमर। मैंने ऑलरेडी अपना फेस प्रेप कर लिया है। आई हैव अप्लाई मॉइस्चराइज़र, एलोवेरा जेल एंड थोड़ी स्वेटिंग भी हो रही है क्योंकि सबसे पहली चीज़ हमें करनी है वो है अपना आई मेकअप। आई मेकअप पहले कर लीजिए। ये ब्राइड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना आई मेकअप पहले करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी आप अपने आईज़ पे लगा रहे हो, आई शेडो वगैरह, तो उसका जो भी डस्ट आता है आपके फेस पे वो आपके बेस को फिर ख़राब नहीं करे। आई एम गोना यूज़ दिस कलर बार फुल कवर मेकअप स्टिक। तो आप अपने फिंगर टिप्स पर रख लीजिए और अपने आँखों पर लगा लीजिए एंड जस्ट डैब इट। आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि अच्छे से ब्लेंड हो जाए, बिल्कुल ब्लेंड नहीं होगा तो मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। और बेस लगाना ज़रूरी इसलिए भी है ताकि आपका मेकअप टिके। नाउ वील अप्लाई सम लूज़ पाउडर। आप इस पर लूज़ पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं या अगर आप कॉम्पैक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वॉट एवर सूट्स यू यूज़ दैट। आई एम यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट, दिस इज़ फ्रॉम कलर एसेंस और ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है। ये बहुत मैट फिनिश देता है। सो वी आर गोना डू आवर आई मेकअप। बिफोर स्टार्टिंग योर आई मेकअप जो सबसे न्यूट्रल शेड होता है, जैसे कि ये है मेरे पास, आप इस तरह की शेड को अपनी आँखों पर अप्लाई कर लें। दिस विल प्रिवेंट योर मेकअप फ्रॉम ब्लीडिंग। ये ब्राउन यूज़ कर रहे हैं थोड़ा नीचे क्रीज से, फिर उससे भी डार्क शेड है ये। I'm gonna use it in the outer corner, just from here, just इतना ही। It is basic is the new cool। ये शेड यूज़ करने वाली हूँ from the inner corners। Actually not the corners but the eyelid। I'm gonna use from this palette ये dark brown shade for my crease। Take a very little amount on your fingers because you don't want too much of it। Please do apply some lip balm on your lips। So I use this lip balm from Biotic। ये बहुत अच्छा है, Bio Almond lip balm। It really suits me। ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा है। I always use this for highlighting my inner corners। Now we are gonna apply the eyeliner। So I always use this liner, that is like my Insta liner। ये मेरा फेवरेट है। ऐसे बस ये हो गया। Now you just have to fill it in। अब जो अगली चीज़ हम करने वाले हैं वो है अपने फेस बेस क्रिएट करना। तो उसके लिए आई एम यूजिंग अगेन, आई एम गोना यूज़ दिस ऑल ओवर माई फेस बिकॉज आई एम नॉट अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन और एनीथिंग। सो जस्ट दिस बस।
take this blender. I'm using this cube blender. Just dab it. Don't rub it all over your face. Just dab it. Don't forget your ears. अगली चीज़ obviously we want this to set. उसके लिए use your compact or any translucent powder just under your eyes. तो मैं ये वाला ब्रॉन्जर शेड इस्तेमाल कर रही हूँ. दिस डू लाइक फिश माउथ बस एंड ब्लेंड. I'm going to use this same shade to, contour my jawline. This shade from my palette. Very beautiful pink. Smile and just using this shade again. अब अपने ब्रश को ज़ूम करके अप्लाई करें. ये वाला शेड स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइटर शेड्स. Take off the excess and apply it under your eyes. ये वाला I'm going to use this mascara from Color Essence. Just wipe off the lip balm. I don't really like using a makeup fixer spray. I simply like to dab some compact on my face again because I think it locks whatever I have put in there. Balu ke liye I'm not gonna go very specific. I'm just gonna do a bun and add some flowers to it. I'm gonna show you the whole look when it's done.